Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the fourth lecture of this series of CPC. In the previous lecture we had seen matter in issue and title. Now three things you have to take care of. One is the title, other is the cause of action and the matter in issue. अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं आपको फिर से. तो मैटर इन इशू, टाइटल एंड कॉज ऑफ एक्शन, इनका डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन इज द लीगल राइट एंड द वायलेशन ऑफ देयर ऑफ. Title is the legal capacity with respect to what? With respect to the subject matter of the suit. In what legal status and in what legal capacity you are related to the subject matter. In what legal capacity are you filing the suit? And matter in issue is the fact. What fact? Which creates the right. Or you can say that which creates the legal capacity. Either ways. Matter in issue is the fact which creates this legal right, or also you can say that which creates this legal capacity. So that differentiation should be very clear to you. The legal right for the violation of which you are filing the suit, that legal right will be a part of the cause of action. The legal status or capacity in which you have filed the suit, and that legal status with respect to the subject matter, that is title, and any fact which goes on to prove or disprove the existence of that legal right, or goes on to create the legal right, or goes on to create that legal capacity, that fact will be, or that process or that fact will be called the matter in issue. For example, of previous lectures example, this F, A and Fs. Now Fs files a suit against A. Fs has filed a suit against A. Let's talk about the things related to Fs. आप A के लिए भी बात कर सकते हैं. Now Fs is claiming that I have got the property from my father as a class 1 legal heir. As a class 1 legal heir because of the interstate succession. So this is the process, this is the mode by which he says, the fact by which he says that he has got the right to ownership and right to possession of the said property. Now this is what? Matter in issue, cause of action or title. This is the matter in issue, क्योंकि इसी से उसको लीगल कैपेसिटी ऑफ ऑनरशिप मिलता है और इसी की वजह से द ऑनरशिप एंड देयर इज अ राइट टू कन्फर, इसी की वजह से देयर इज कन्फरेशन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन upon the property. So that ownership is the legal capacity in which he is filing the suit, that I am the owner and I am having the right to possess. Therefore the ownership is the legal capacity which will be called the title. As far as the legal right for which he files the suit is, obviously he seeks a declaration for ownership. Obviously that ownership also becomes the part of the cause of action. Right to have a declaration of ownership. Right to have a declaration of ownership and denial of that ownership by the other party. अगर वो declaration मांगता है plus साथ में he is seeking also the possession. So right to have the possession of the property. Why? Because he is the owner, and the denial of the possession by the opposite party. तो यहाँ पर वो title भी मांग रहा है और possession भी मांग रहा है. Suppose A has filed the suit for the declaration of title as well as possession. So there, with respect to the declaration, the cause of action will be the right to have ownership declared and the denial of that title and the denial of that title of ownership by the opposite party. So that is one point of cause of action with reference to the declaration of the title. Now yesterday we had not talked about the declaration of the title, but suppose we add a point here. So we add a point here, declaration of title. And suppose he was seeking, secondly he is seeking possession. So right to possess. Why? Because he is the owner. And plus denial of that right to possess. So these two are the part of the cause of action. Legal right and the violation of the legal right. Why does you have the legal right?
Because he is the owner. So ownership is the title. And how does he becomes the owner? How does he become the owner? Because he claims that I got the property in succession. So this process by which he declares that I have got the property in succession. So this process will be called, or this fact will be called the matter in issue. मैटर इन इशू आपका वो है जो आपका लीगल कैपेसिटी और लीगल राइट क्रिएट करता है, और कॉज ऑफ एक्शन वो है जो आपके लीगल राइट के वायलेशन में अमाउंट करता है. इट अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, एग्जिस्टेंस एंड द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट. एंड टाइटल इज दैट which declares the legal capacity in which you filing the suit. So you think of other example. Now say there is father F who denies the paternity to his son FS. उसने अपने बेटे FS को बोल दिया कि that he is not my son. Now this FS files a petition for the declaration of paternity. अब इस में ये petition, I am saying petition not the suit. So he is a petitioner. So वैसे तो सिविल केस ही है, but terminology का फर्क है. We can also say suit. So if he files a suit for declaration of paternity against F. अब आपको मुझे बताना है कि मैं तीनों चीज लिख देता हूँ यहाँ पर. एक तो मैटर इन इशू, एक टाइटल और एक कॉज ऑफ एक्शन. व्हाट इज द मैटर इन इशू and cause of action and title in the case? The suit is, or the petition is, for the declaration of the paternity. Now he says that FS alleges that I was born as a biological natural child of my mother, and mother was married to my father, and while the marriage was continued I was born, and therefore I was the son, and therefore I am the son. Now यहाँ पर सेक्शन 112 का प्रिजम्पशन भी हो जाएगा. Therefore I am the legitimate son of my father. The section 112 एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन भी हो जाएगा यहाँ पर. So that is the issue कि he is saying that I am the legitimate son of my father. अब बताइए यहाँ पर cause of action क्या होगा. So what is the cause of action? So cause of action is right to paternity or right to admission of paternity, right to declaration of paternity, and the denial of that right by the father, by the respondent or the defendant. Now title you say FS is the legitimate son. So in the capacity of being legitimate son, he has filed the suit. So legitimate son or sonship, whatever you write. Now what is matter in issue? अब वो क्या कह रहा है उसके बेसिस पे ही देखोगे आप वो एलेज क्या कर रहा है. तो इसको प्रूव करने के लिए, लेजिटिमेट सन को प्रूव करने के लिए, on what facts he would give the evidence? He would give evidence of the fact that there is a valid marriage between his father and mother, his mother and father, and on other fact he would give evidence that he was born during the marriage. So how does he acquire the legitimate sonship? How does he become a legitimate child? Because his mother is married to the father validly. His mother was married to the father validly, and during the continuance of marriage, this person was born. अब presumption of 112 वगैरह की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे. That is matter of evidence. तो जो 112 evidence act वगैरह का presumption है, that is matter of evidence. But the fact he was born to his mother while the marriage of mother and his father continued to exist, so that fact in itself is a fact which go on to establish his paternity. That is the fact which goes on to establish his paternity. तो legitimate paternity create तो इसीलिए हो रहा है. Legitimate paternity is created from this, and therefore this is a matter in issue. A title he gets because of this is the legitimate sonship. Sonship means legitimate paternity, being a legitimate son. So that is the title of legal capacity in which he files the suit. And the cause of action is his right. Cause of action is his right. His right that his father admits that he is my legitimate son,
or you can say that a right of declaration, right to have declaration that I am a legitimate son, and the denial of that right by the defendant father or respondent father. So that's fine for all. अब इसी प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, बहुत सारे लॉज आपने पढ़े होंगे या आगे भी पढ़ोगे, तो कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लो, उसमें इन सब को सेट कर सकते हो आप. एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. आई एम रिपीटिंग. मैटर इन इशू. मैटर इन इशू इज दैट प्रोसेस, दैट फैक्ट which creates a particular legal right in you, which the confers the legal capacity in you. Of the legal status, the legal capacity in which you are filing the suit in reference to the subject matter of the suit is your title, and cause of action is always the existence of a particular legal right in you because of that particular legal capacity and violation of that legal right by the opposite party. अब देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन दिस एग्जांपल. अब इसमें जब मैंने बताया था व्हाट इज द टाइटल, देयर सम पर्सन is having doubt that there it is a successor is the title, but that is wrong. How do you understand why it is wrong? अब देखिए, successor, being a successor itself is not the title. Being a successor is the phenomenon or the process which creates a title in you, and that title here is that of ownership. So ultimately, because of succession, because of the gift deed, because of the sale deed, because of will, a person will ultimately acquire ownership. So that ownership he acquires ultimately, that will be the title, and the process by which he had acquired it, the reason by which he has acquired it, that reason will be the matter in issue. That will be matter in issue. अब उस टाइटल की वजह से he has got certain rights. अब jurisprudence में you see, jurisprudence जिसने पढ़ा होगा, jurisprudence you see, if you have got a particular right, then there will be some ancillary rights. So you have got the right to ownership because of the succession. So the title is the ownership, and the right to ownership is there. But there are several ancillary rights. You can sell the property because you are the owner. You can possess the property and enjoy the property. You can give the property over rent, and so forth. तो जितने भी आपके एंसिलरी राइट्स हैं, उनमें से एक राइट है आपका ओनरशिप की वजह से, एक राइट है आपका राइट टू possess एंड एंजॉय, and that legal right is violated by the opposite party. That legal right is being violated by the opposite party. So the existence of that legal right in you and the violation of that right by the opposite party, that is what constitutes the cause of action. Now it can be any legal right. मान लो अब यहाँ पर तो डिस्पोजेशन का केस था, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहा था, दैट वाज द केस. लेकिन कुछ और आप सोच लो. टेक अनदर एग्जांपल. For example, he wants to sell the property and someone is causing obstruction in the sale. So you can always again file the suit with the cause of action right to sell the property in violation of that right by the opposite party. तो आपके पास उस ओनरशिप की वजह से, उस टाइटल की वजह से बहुत सारे एंसिलरी राइट्स होंगे. अब उनमें से जिस एंसिलरी राइट को अपोजिट पार्टी ने वायलेट किया है, वो राइट आपके पास होना और उस राइट का वायलेट होना दोनों मिलकर कॉज ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. फाइन. अब इस पर फर्दर डिस्कशन आई विल डूइंग व्हेन आई गेट इनटू द रेस जुडिकाटा, बट इट इज ऑलमोस्ट एक्सप्लेन्ड, बट वी विल टेक अप मोर एग्जांपल्स व्हेन वी गेट इनटू दैट. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कॉज ऑफ एक्शन. उसके पहले वो भी जैसे भी रेमीडियम. देन वी ऑल्सो seen that how it relates, that how CPC plays a role in the maxim. OVJCB remedium I told you. The cause of action, matter in issue, relief, subject matter, then title, parties में pro forma defendant, that we had already discussed. Subject matter हमने देख लिया. अब subject matter क्या है? जब भी आप सूट फाइल करोगे तो या तो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा या फिर अदरवाइज किसी और लीगल राइट से रिलेटेड होगा. सो यू कैन कॉल इट दैट पर्सनल राइट.
whenever you file a suit, the suit will be related to either of obtaining some property or any right upon some property or any other personal right. So subject matter of the suit will always be either proprietary or it will be personal. It can be property directly or it can be the right pertaining to the property और इट कैन बी एनी अदर पर्सनल राइट। अब जैसे जो एग्जांपल देखा था वो बच्चा सूट करता है टू क्लेम पैटर्निटी, so that is not proprietary, that is a pure personal right. So his right to have a declaration that I am a legitimate son of so and so person. ठीक। Then we had also seen the distinction between the various sections, orders and rules. सेक्शन और रूल के बीच में भी हमने देख लिया what is the relation and difference. Distinction between the various rules and sections, ये भी देख लिया हमने। Now you see एक पॉइंट और आपको समझाना before I get into the next topic, the rule of interpretation with respect to CPC, or you can say the jurisprudential essence of CPC. So either ways, rule of interpretation with respect to CPC or jurisprudential essence of CPC. Now you see when you talk about CPC is a procedural law. It is a procedural law, and what is the purpose of CPC? The purpose of the CPC is to provide the remedies in the cases of violation of legal rights. Now you see it is about the conflict between A and B, or maybe more persons, but it is always about a conflict with respect to some legal rights of A as being alleged and violated by which is violated by B. अब देखो इसको ध्यान से, तो बहुत ज़्यादा सोसाइटल मैटर्स इसमें नहीं है. So it is more of a right in personam. It can be right in rem also, but right in personam जैसे contract वाले matters, right in rem जैसे tort वाले matter. So it is all about your personal rights, either right in rem or right in personam. It is right against world at large or right against a particular individual. In the contract cases, in the sale of goods, partnership, contract, etc., it is always right against the particular individuals. Indemnity, guarantee, agency, etc., वो सब right in personam होंगे. Tort जैसे मैटर में TPA will also be right in personam, but tort जैसे मैटर में it is right in rem also. For example, normally my right that no one should cause nuisance against me, so that is the right in rem. And if someone causes nuisance, then my remedy will be enforced against him in personam. तो ये टॉर्ट में आपने पढ़ा होगा कि रेमेडी हमेशा इन पर्सोनम होगा, लेकिन राइट जो है राइट ओरिजिनली इज इन राइट इन रेम. सो दैट वेज यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ CPC, the purpose of CPC क्या होगा? To do the balancing of rights between or the interest between two or more individuals, and to bring about the justice between two. To do the balancing of interest between two or more individuals and to do the justice between the two in light of the particular law which is concerned. अब इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा. Right? The purpose of CPC as procedural law is to balance the right and interest between two or more individuals. The right concerned may be the rights in personam or right in rem, but the conflict is between two or more individuals. The court has to decide in light of the respective domain of the rights of the two individuals as to whether the right of one has been violated by the other or not, and for that purpose evidences have to be recorded. The CPC provides the entire set of proceedings by which a conclusion may be arrived at. Real justice can be done only when a fair opportunity is provided to each of the parties
तो वो ऑडियार ट्रम पार्टम की बात कर रहा हूँ, रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, ऑडियार ट्रम पार्टम मैक्सिम है। Real justice can be done only when a fair opportunity is provided to each of the parties to present his case. The CPC therefore has to be read flexibly in the interest of justice to the parties. Procedure has always handmaid of justice. इस सेंटेंस को रट लेना, कहीं भी एग्जाम में लिखोगे तो आधा नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब न्याय को अग्रसर करने के लिए प्रक्रियात्मक विधि बनाई जाती है और प्रक्रियात्मक विधि का उद्देश्य न्याय को अग्रसर करना है। अतः प्रक्रियात्मक विधि को आप कठोर रूप से नहीं पढ़ सकते, आपको उसे लचीले रूप से पढ़ना होगा जहाँ भी आवश्यक हो। The procedure has always the handmaid of justice means. Procedure is a handmaid of justice means. The purpose of procedural law is for the ends of justice, and therefore you cannot be too flexible and too rigid about the procedure. Therefore you cannot be too rigid about the procedure. What I am trying to tell you is कि मान लो CPC में कहीं लिख दिया है that this should not be done, something just written statement should not be allowed after 90 days. अब लेकिन मान लो कि 90th डे पे कोई व्यक्ति एक WS लेकर चला और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और 25-30 दिन बेचारा हॉस्पिटल में था, बच गया वैसे तो। अब उसके बाद कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि 90 डेज हो गया, अब जाओ आप। अब उधर उसकी क्या गलती थी बेचारे की? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 90 डेज के पहले क्यों नहीं फाइल किया आपने। अब आपने 90 डेज का एक्सटेंशन दे रखा है उसको, तो उसका राइट है कि वो 90th डे पे भी फाइल करे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सिविल प्रोसीड्योर एंड क्रिमिनल प्रोसीड्योर सिमिलरली वी कैन नॉट रीड इट वेरी रिजिडली। नॉर्मली यू हैव टू फॉलो द लैंग्वेज लिटरली। जो भी लिखा है CPC में, यू हैव टू फॉलो दैट इन द लिटरल सेंस। बट इफ यू फाइंड दैट the literal application of the language of the section may get the failure of the justice, then the court will always go for making that language flexible. So if there is a prohibition in the CPC, but if it is found that a rigid adherence to that prohibitory provision will result into the failure of justice to one of the parties, then the court always has the discretion to read that restrictive provision flexibly. So that is very important rule of interpretation regarding CPC as well as CRPC. दोनों में यही रूल लगेगा, लिखिए इसको आप। Right, even if there is a prohibitory provision, if the court finds that a rigid adherence of the provision may result into the failure of justice to one of the parties, the court can read the provision flexibly in the interest of justice. Now the rule of purposive interpretation will apply. Now you understand purposive interpretation? कि वैसा इंटरप्रिटेशन करो जो उस लॉ के पर्पज को सर्व करे। The rule of purposive interpretation will apply. That is, any provision has to be interpreted in such a manner that the larger purpose of doing justice is served. So that's all for the approach towards CPC. अब ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो we go on to discussing all these. Now you see what I am saying was, मान लो CPC का कोई एक सेक्शन है and the section का language is ambiguous. The language of section is ambiguous. अब language is ambiguous means two or more interpretations are possible. अब मान लो उसके 3 इंटरप्रिटेशन है, तो 3 में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो। अब उसमें से किसको आप फॉलो करोगे? अब द रूल इज सिंपल, गो बाय द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। और ये आपने पढ़ा होगा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, देन आपका मिसचीफ रूल, हेडेंस रूल एंड ऑल दैट। सो ऑल दैट उसमें से पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ CPC? टू डू द जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, एंड देयरफॉर व्हाट इज द
purpose of that particular provision ultimately to do the justice between the parties. And if the purpose is to do justice between the parties, and if you find that if you go by the literal interpretation and the narrower interpretation or textual interpretation, you will resulting into a difficult justice with the another party, then you will have to go for the literal interpretation. Then you will have to go for a liberal interpretation, and you have to adopt that interpretation out of these which serves the purpose of doing justice better. So that is the approach. और प्रोसीड्यूर लॉ में तो खास करके सो दैट इज़ द अप्रोच. तो सीआरपीसी में भी पढ़ाया होगा मैंने आपको इस तरीके का अप्रोच, तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच इज देयर. तो प्रोसीड्यूरल लॉ में द अप्रोच इज द दैट इंटरप्रिटेशन वुड बी अडॉप्टेड विच सर्व द पर्पज ऑफ डूइंग जस्टिस इन बेटर वे. अब सीआरपीसी में और यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है दैट इन सीआरपीसी इट इज द बैलेंस बिटवीन societal interest on one hand and the individual interest on the other hand. Societal interest and the individual interest CRPC में. अब CPC में it is not societal. Larger run में देखो तो societal ही होगा, but actually practically it is between two individuals. और जैसे मेरे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट हमारे बीच में, तो सोसाइटी क्या करना उसमें, तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट मेरे और आपके बीच होगा. सो इन दैट वे यू सी, so here the difference is that in CPC it is the conflict between the individual and individual. In the CRPC, in criminal law, I hope you remember, it is for the societal purpose, societal stability. So societal interest in convicting, in finding and convicting the culprit or accused, and the individual interest that the various rights accused has. So the balancing between these two. And in CPC, it is the balancing between my and your rights, two individuals. So that is the difference. But लेकिन दोनों में ultimately doing justice is the ultimate goal. अब यहाँ पर individuals के बीच में justice और CRPC में society के बीच में और individuals के बीच में justice. So the ultimate purpose of both is the same. Both are the procedural laws. Ultimate purpose of both is doing justice between the parties concerned. In CPC it is two or more individuals and in CRPC it is society and individuals. अब क्योंकि justice is the ultimate purpose, so balancing of interest, that flexible approach in light of the purpose, will be the approach of the court both in CPC and CRPC. अब पहला approach हमेशा होगा कि जो भी लिखा है उसको पढ़ो पहले. CRPC या CPC में जो शब्द लिखे गए हैं उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर शब्दों को लिटरली फॉलो करने से, शाब्दिक रूप से फॉलो करने से किसी के खिलाफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिफीट हो रहा है, तो फिर उसको हम फ्लेक्सिबल करके बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो बेटर होगा वैसा इंटरप्रिटेशन फॉलो करेंगे. सो इज दैट फाइन? सो दैट इज ऑल. अब नेक्स्ट इशू वी हैव टू डिस्कस. नाउ नेक्स्ट इशूज वी हैव टू डिस्कस इज we have to discuss Order 4, Section 26 and Order 6, Rule 15. And what we have to see is what is the difference between suit and plaint. And second part is as to the requirement of affidavit. Now please take out Section 26. So Section 26 is saying, every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. So that you already know. So you understand that it can be a plaint or in any other manner means what? It can be a petition or it can be an application. A petition का for example Hindu Marriage Act or an application as you file in the Hindu Succession Act. But normally you file plaint unless it is required in some law that it has to be filed in petition and application. फॉर्मेट सेम होगा, कुछ फ़र्क नहीं होता, बट प्रेयर क्लाउजेज वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज द एवरीथिंग इज द सेम. और थोड़ा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस हो जाता है. वहाँ पर रेस्पोंडेंट होगा, उधर डिफेंडेंट होगा, इधर प्लेंटिफ होगा, एंड देयर इट इज एप्लीकेंट एंड petitioner. So they are declaring in 26 that every suit shall be instituted by the presentation
of a plaint or in such other manner as may be prescribed. So you see, they are themselves saying that there is a plaint. The plaint has to be filed, and by filing of the plaint, the suit is instituted. मतलब वो सेक्शन के लैंग्वेज में ही उन्होंने प्लेंट और सूट को डिफरेंट बताया है. A suit shall be instituted upon filing of a plaint means suit is different from plaint. Suit is something more. Plaint आप फाइल करोगे उससे सूट इंस्टीट्यूट होगा. So suit is something more, something beyond a plaint. Now what is the difference between a suit and plaint? अब सूट और प्लेंट का डिफरेंस इस बात पे है कि प्लेंट तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हुआ. अब मान लो आई हैव ए डॉक्यूमेंट, तो वो मेरा प्लेंट होगा. उस पर मैंने लिख रखा है सब कुछ, नीचे साइन कर रखा है, वेरिफिकेशन कर रखा है. मतलब डॉक्यूमेंट इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज आस्क्ड बाय द कोर्ट. तो मेरे सारे प्लीडिंग्स उसमें हैं. दैट इज अ डॉक्यूमेंट. अब सूट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स. अब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, आपको सूट नंबर मिल गया. इन द कोर्ट व्हेन यू गो फॉर ऑफिस ऑब्जेक्शन एंड ऑल, आपको सूट नंबर मिल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? यू हैव टू फाइल द प्रोसेस फी, करेक्शन के बाद प्रोसेस फी, उसके बाद समन्स, देन रिटन स्टेटमेंट, देन उसके बाद फर्स्ट हियरिंग एंड इशू फ्रेमिंग. सो ऑल दोज थिंग्स विल हैपन. सो ये जो एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स कमेंसिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट. जिस दिन आपने प्लेंट फाइल किया फाइलिंग काउंटर पे जिस दिन आपने प्लेंट फाइल किया, वहाँ से लेकर अंत तक जितने भी सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगे, उन सब को मिलाकर यू विल कॉल इट अ सूट. So suit is a dynamic kind of thing which contains the various proceedings, but the plaint is just a document upon which you have written your pleadings, and that is quite manifest on the language here. So you see, every suit shall be instituted by the presentation of a plaint. Suit shall be instituted. Now what is meant by suit instituted? Proceedings instituted. When you say suit instituted, it means the entire set of proceedings instituted by filing of the plaint, petition or application. तो पहले तो आप इसको लिख लें. Right. A plaint is the document of pleadings. A plaint is the document of pleadings made by the plaintiff. But once the plaint is filed, the set of proceedings is initiated. The entire set of proceedings initiated upon the filing of plaint is called the suit. अब सूट को आप डॉक्यूमेंट नहीं बोलोगे, डॉक्यूमेंट को आप सूट नहीं बोलोगे. सूट इज ऑल द प्रोसीडिंग्स, लाइक समन्स का इशू करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सूट. रिटन स्टेटमेंट फाइल करना, दैट इज पार्ट ऑफ सूट. फर्स्ट हियरिंग पे क्वेश्चनिंग एग्जामिनेशन होना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सूट. एप्लीकेशन फाइल करना, रिजॉइंडर फाइल करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सूट. अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना, ट्रायल करना, इशू फ्रेमिंग करना, everything is a part of the suit proceeding. So suit is basically a set of proceedings initiated upon filing of the plaint, petition or application. Is it fine? अब आगे बढ़िए. सेकंड क्लाउज. In every plaint, facts shall be proved by affidavit. अब facts shall be proved by affidavit means what? जाओ ओथ कमिश्नर के सामने, एफिडेविट बनाओ, ओथ पे उसको कोर्ट में फाइल करो, और जो भी तुम कह रहे हो सब प्रूव हो गया. अब अगर ऐसा होगा तो ट्रायल फिर किस बात का होगा? दे डू नॉट मीन दैट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. तो एफिडेविट से आपका एविडेंस प्रूव हो जाएगा. दे जस्ट मीन द फैक्ट्स, द प्लीडिंग्स मेड इन द प्लेंट शैल बी सपोर्टेड ऑन ओथ थ्रू एन एफिडेविट. अब जब आप प्लीडिंग्स फाइल करोगे, व्हेन यू ड्राफ्ट योर प्लेंट, जब आप अपना प्लेंट ड्राफ्ट करोगे, अब यू सी द फॉर्मेट ऑल दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. ये कोर्ट का नाम वगैरह लिखने के बाद द प्लेंटिफ हम्बली सबमिट्स या प्लेंटिफ हम्बली सोएथ, कुछ भी आप लिखना चाहो डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस दैट इज देयर इन द कोर्ट. सो वॉट एवर बी द फॉर्मेट, फिर उसके बाद वन बाई वन 1 2 3 4 आपके पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे. अब आपके प्लेंट में जब लास्ट में आप पढ़ोगे रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स, जब आप लास्ट में पढ़ोगे,
ऑर्डर 6 रूल 15 आप जब पढ़ोगे उसमें देखेगा ये आपने अपने प्लेंट में पैरावाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पॉइंट लिखे, और उसके बाद उसी के नीचे आपका प्रेयर क्लाउज वगैरह आएगा। सारे पैराग्राफ लिखने के बाद देयर इज ए प्रेयर क्लाउज। अब उस प्रेयर क्लाउज के बाद देयर इज ए वेरिफिकेशन का क्लाउज। आपको लास्ट में एक वेरिफिकेशन डिक्लेयर करना पड़ता है, दैट आई हियर बाई डिक्लेयर दैट पैरा 1 2 3 एक्सेट्रा आर ट्रू टू माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड पैराग्राफ सो एंड सो आर ट्रू टू माई इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ आप लिखते हो, तो दैट इज द वेरिफिकेशन दैट कि ये चीज़ें तो मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, बट मेरे लॉयर ने बताया है तो मुझे विश्वास है कि वो सच होगा। बट इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ पर्सनली नोन टू मी, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द लॉयर। सो दैट इज़ द वेरिफिकेशन क्लाउज। तो वेरिफिकेशन तो कंपलसरी है ही है, चाहे आप प्लेंट फाइल करो चाहे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो। एज पर ऑर्डर 6 रूल 15 verification is must, but at the same time now by the 2002 amendment they have added this second clause to section 26, and it is fourth clause in order 6 rule 15 which has also been added by the 2002 amendment। 99 में amendment हुआ था लेकिन it came into force in 2002, and as per that amendment it is not only the verification that you have to make, but along with the verification you will have to make an affidavit before the oath commissioner, and that affidavit also has to be filed। तो ये जो वेरिफिकेशन करते हो आप, ये आप डिक्लेरेशन करते हो कि ये पैराग्राफ मेरे नॉलेज के अनुसार सच हैं और ये पैराग्राफ मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार सच हैं। तो वहाँ पर आप ओथ पर नहीं बोल रहे, वहाँ अपने आप बोल रहे हो आप। लेकिन एफिडेविट का रिक्वायरमेंट अगर है तो मतलब आपको कोर्ट में ओथ कमिश्नर के सामने ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और फिर वो उसको अटेस्ट करेगा, एंड दैट बिकम्स अ एफिडेविट। और अगर आपने एफिडेविट में झूठ बोला है तो यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरी अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। 193 तो है गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ। इट इज पनिशेबल अंडर 193, वैसे तो 191 होगा बट पनिशेबल अंडर 193, सो इट इज गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस, सो यू कैन हेल्ड लायबल फॉर दैट। सो द एक्सपेक्टेशन इज, क्योंकि आपको एफिडेविट भी फाइल करना है, तो ये जो आप फॉल्स केसेस करते हो या फॉल्स प्लीडिंग करते हो और कोर्ट का टाइम खराब करते हो, द पार्टीज विल नॉर्मली refrain from that, and therefore it puts a kind of additional responsibility upon the party, that it is not only verification, since they have to file the affidavit also, which is on oath, since you have to file the affidavit also on oath, so by that you will be having that a kind of additional responsibility कि मैं झूठ ना बोलूं या frivolous kind of pleadings ना करूं, क्योंकि मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब the question before the Supreme Court in the Salem advocate was as to if you are already asking for verification, then why is there additional duty to file an affidavit? And the court held that it is about reducing frivolous and unnecessary proceedings। कई लोग वैसे ही झूठा केस कर देते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, टाइम वेस्टेज बचाने के लिए, प्रोसीडिंग्स को छोटा करने के लिए अगर आपके ऊपर ये एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए कि आप ओथ पर एफिडेविट फाइल करोगे, सो आउट ऑफ दैट फियर फॉर बीइंग प्रोसिक्यूटेड यू आर रेफ्रेन फ्रॉम फाइलिंग फॉल्स पिटिशंस या फॉल्स प्लीडिंग्स। सो जस्ट टू अवॉइड द फॉल्स एंड फ्रिवलस प्लीडिंग्स दिस एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि सिर्फ वेरिफिकेशन करोगे उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज ओनली अ डिक्लेरेशन, it is only a declaration of a party। Now if you may please also see order 6 rule 15। order 6 rule 15, save as otherwise provided by any law, save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading
at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. Repeat कर रहा हूँ. Save as otherwise provided by any law for the time being in force. Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. Now, जब भी आप pleading करोगे, here they are talking about pleading, तो pleading plaint में भी होगी और pleading written statement में भी होगी, pleading replication में भी होगा, pleading rejoinder में भी होगा, pleading additional written statement में भी होगा. जब आप amendment of pleadings का application लगाओगे वहाँ पे भी pleadings होंगे. तो जब भी आप कोर्ट में pleadings फाइल करते हो, चाहे जिस फॉर्म में भी फाइल करोगे, हमेशा उसके नीचे you have to make a declaration, a verification that to my knowledge these facts are correct and these facts are correct to my information and belief. So that verification has to be filed. Now 26 is talking about only about the plaint. Here you are talking about everything, WS and everything. So it is a more general and broader provision. And the person verifying shall specify by reference to the numbered paragraph of the pleading. The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true. The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs. Just para 1, 2, 3, 4. So that way of the pleading. So that paragraphs of the pleading, that is what he verifies of his own knowledge, and what he verifies upon information received and believed to be true. मतलब उनमें से किस किस प्लीडिंग को वो अपने नॉलेज पे सच मानता है और उनमें से किस किस प्लीडिंग को वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सच मानता है. So that thing you have to specify in the verification. Then the verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed. वो तो ठीक है, जिसने भी किया है, अब जो प्लीडिंग कर रहा है वो खुद साइन करे, बहुत सारे पिटिशनर्स हैं अगर तो उनमें से कोई एक कर दे, और या फिर खुद ना करके उसका एजेंट या कोई भी व्यक्ति जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानता है वो भी साइन कर सकता है. फिर साइन करने के साथ साथ यू हैव टू राइट द डेट and the place where you have signed it. And now the fourth clause, it is added by the 2002 amendment, wherein they are declaring the person verifying the pleading, मतलब जिसने verification किया, shall also furnish an affidavit in support of his pleadings. मतलब 26 clause 2 is talking about only about the plaint, but here they are talking about plaint, WS, whatever pleading, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, आपका रेप्लिकेशन वगैरह, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो भी उसको वेरीफाई करेगा वो साथ में उसका एफिडेविट भी लगाएगा. एंड दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट एज टू व्हाई इज एन एफिडेविट आल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू ऑलरेडी हैविंग अ वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग्स. ठीक, अब इसको थोड़ा सा लिख लें आप, राइट डाउन. बाय द 2002 अमेंडमेंट under section 26 clause 2 as well as order 6 rule 15 subclause 4 subrule 4 as well as order 6 rule 15 subrule 4, an additional requirement has been put upon the party concerned to file an affidavit along with the verification of the pleadings. A question was raised as to why is affidavit is additionally required if the verification is already required to be signed. Okay, इसका नाम लिख लो, that is 3 judges bench, और इस केस को आप रट लेना क्योंकि इस केस को बार बार यूज करेंगे हम CPC में. राइट डाउन सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन कॉमा सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन कॉमा तमिलनाडु वर्सेस
Union of India. It is 2005 Supreme Court, and it was 3 judges bench, and judgment delivered by Y.K. Sabharwal Justice. Y.K. Sabharwal Justice. Supreme Court held, write down, the Supreme Court held that the requirement of the affidavit is primarily to put an additional responsibility, to put an additional burden या responsibility upon the party या to the deponent. तो जो भी एफिडेविट फाइल करता है he will be called a deponent. वैसे तो वो पार्टी होगा, but since he is filing an affidavit, we are talking about the affidavit, so he is a deponent. So put an additional responsibility upon the deponent, ब्रैकेट में पार्टी लिख लो, to ensure that he does not make frivolous or false pleadings. The mere verification may not have caused sufficient deterrent effect. तो सिर्फ वेरिफिकेशन से डेटरेंट इफेक्ट काउज नहीं होता, एंड देयरफॉर द ओथ वाला एफिडेविट इज रिक्वायर्ड. एक और पॉइंट लिख लो, द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड हाउएवर दैट सच एफिडेविट कैन नॉट बी used directly as a piece of evidence. Such affidavit cannot be used directly as a piece of evidence. एक और थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, the court also held that affidavit would be required even upon the application for amendment of pleadings. So basically the point is कि आप ये एफिडेविट फाइल करवा रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि एफिडेविट फाइल करना कंपलसरी है, तो क्या एफिडेविट से ही उसके फैक्ट प्रूव हो जाएंगे? तो दैट वुड बी इलॉजिकल कि मैंने जो भी कहा है, मतलब मैंने एफिडेविट साइन करके डाल दिया और मेरे फैक्ट्स प्रूव्ड माने जाएंगे. अब इस तरीके से तो आपके फैक्ट्स भी प्रूव्ड, ऐसी डिफेंडेंट एफिडेविट दे देगा, उसके फैक्ट्स भी प्रूव्ड, फिर जज साहब का क्या काम? So it is not for the purpose of evidence. They required that affidavit. The purpose of affidavit is to create that deterrent effect, to prevent a party from filing false, frivolous applications or pleadings, and therefore the court go on to declare that this affidavits will not be used for the purpose of evidence as such. एविडेंस में तो आपको ट्रायल में कोर्ट में खड़े होकर एविडेंस देना पड़ेगा, उसके लिए आपका यह एफिडेविट यूज नहीं होगा. सो दैट इज ऑल. अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन है, दैट इज अबाउट ऑर्डर 4. देन देयर आफ्टर वी वुड मूव टू द ज्यूरिडिक्शन, सेक्शन 9. अब ऑर्डर 4 दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स. मैं ये आपको बता भी चुका हूँ कि हाउ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, duplicate copies and all that. Every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. So actually the plaint is instituted not before the court directly, it is instituted on the filing counter. So the officer they are talking about is basically the registrar of the court. और रजिस्ट्रार खुद तो आपका प्रिंट लेगा नहीं, ऑब्वियसली he is appointing an agent. He will be appointing an agent. So the person sitting on the filing counter is the officer before whom you will file the plaint. So practically you have to file the plaint in the working hours of the court and at the filing counter. So the officer they are talking about is basically the officer sitting at the filing counter. Every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate to the court. So I already told you that the plaint should be filed in 2 original copies. 2 original copies बनाओगे and along with the documents. जितने भी documents आपके support में हैं वो सब आप attach करोगे and you will file it before the court at the filing counter. Every plaint shall comply with the rules contained in Order 6 and Order 7 so far as they are applicable.
So you must appreciate that order 6 is about rules of pleadings. तो जितने भी rules of pleadings है आप उसको follow करोगे. And order 7 is about the rules of filing of plaint. So means order 6 rules of pleadings and rules related to the filing of the plaint in order 7. इन दोनों को follow करोगे. Plus the plaint has to be in 2 duplicate original copies. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in subrules 1 and 2. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in subrule 1 and 2. And the subrule 1 is what? That it has to be in 2 copies plus it has to be filed before the proper officer. And the subrule 2 is that you have to comply with the requirements of the rules of pleadings in order 6 and rules related to the plaint under order 7. तो इनमें से अगर कोई भी एक रूल आपने अगर वायलेट किया है then your plaint is not deemed to be duly instituted. और अगर आपका plaint duly instituted नहीं है then your plaint is liable to be rejected. तो अगर आपका plaint duly instituted नहीं है then your plaint is liable to be rejected. तो ये previous lecture में मैंने आपको बताया था. Means if you do not institute the plaint duly, means if you do not comply the requirements, if you do not comply these requirements, then your plaint may be rejected. अब normally they will not reject it outrightly. They will give you 7 days time to make necessary corrections. तो उसके बाद second rule में तो कुछ नहीं है. They are talking about the register of suits. So the court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suit Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted. So that is basically the suit number. So every court is having the register of suits. और उसमें सूट नंबरिंग के साथ सूट का टाइटल लिखा जाएगा. So that is fine. तो बस फर्स्ट रूल आप ध्यान रखिएगा. तो फर्स्ट रूल में अगर आपसे पूछा जाए कभी हाउ कैन ए सूट बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड या व्हाट इज मीन्ड बाय ड्यूली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट रेदर. सो ड्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट मीन्स व्हाट? नंबर 1, देयर हैज टू बी 2 ओरिजिनल कॉपीज. उसी को कहते हो ना आप डुप्लीकेट. So the plaint has to be filed in duplicate. Then number 2, there has to be a compliance with order 6 and also the compliance with order 7. अगर इनमें से किसी एक बात को आपने comply नहीं किया है then your plaint will not be duly instituted and your plaint is liable to be rejected. Dismiss नहीं, rejected. Plaint कभी भी dismiss नहीं होता. Plaint will always be rejected. Suit will always be dismissed. वो मैं बाद में बताऊंगा what is the difference between two. लेकिन plaint आपका reject होगा, plaint dismiss नहीं होता. लेकिन suit reject नहीं होगा, suit will be dismissed. So here we are talking about the rejection of the plaint. And what is the difference between the two? The rejection of the plaint and dismissal of the suit. तो ये जब मैं rejection of plaint order 7 rule 11 पढ़ाऊंगा, there I will discuss that. So that is fine. अब इसमें लिखवाने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें सब रूल नंबर याद रखना आप. ऑर्डर 4 सब रूल 1 इज व्हाट? ऑर्डर 4 सब रूल 1 इज व्हाट? डुप्लीकेट. तो ये पीटी के लिए भी ध्यान रखना और मेंस के लिए भी. देन रूल 1 सब रूल 2 इज बेसिकली compliance of the order 6 and order 7, and rule 1 sub rule 3 is about duly institution of plaint. यहाँ पर लिखा है ना plaint, सूट नहीं लिखा, plaint लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो इसी को आप कहते हो duly institution of the suit, but in the Bear Act they are using the word plaint. So the plaint shall not be deemed to be duly instituted if either of these has not been complied with. The plaint shall not be deemed to be duly instituted if either of them is not been complied with. So that is all for this order. So that's it. Next we have to move into section 9 that we would see in next lecture.
थैंक यू।